मैदान पर। इस बार भीतरी किनारा लगा, बल्ले से लगे, शरीर पे टकराई, रन के लिए निकले, 1 रन बना स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 2 पर। राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार पर ऋषिकेश गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद, इन वक्त अपने स्टॉक को चेक किया, कवर पर हल्के से गेंद को ड्राइव किया, लिमिट अप पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, सिंगल के साथ 3 पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर। पावर प्ले का पहला ओवर जारी मैच का। टॉस जीता, फील्डिंग करती हुई मैदान पर शान स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम, बल्लेबाजी करती हुई सावरडेम बॉयज क्रिकेट टीम। दोनों बिल्कुल आसपास के टीम है, परिचित है एक दूसरे का, जिस तरह से ये वाड़े की टीम है, लेकिन फिलहाल जो कि मुकाबला कर चुके हैं, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, हल्का सा अपील, लेकिन लेग स्टंप से बाहर गेंद छोड़कर निकल रही थी। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। भारी संख्या में दर्शक इस शाम के दौर में इस मैदान पर, आप सभी का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हटकर खेला, बेहतरीन शॉट, लॉन्ग अप बाउंड्री की तरफ, 2 फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन आखिरकार गेंद उनसे पहले निकलती हुई लॉन्ग अप बाउंड्री पर और पहला चौका निकलता हुआ सावरडे बॉयज क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में। डीजे सात रन स्कोर बोर्ड पर, टोटल स्कोर 5 ओवर का मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, तीसरी टीम पक्की होगी सेमीफाइनल की। फुल टॉस गेंद स्वीप करना चाहते थे, देखना होगा बल्ले पे लगी या शरीर पे, पैरों पे टकराई, अंपायर का इशारा, लेग बाइज का, 1 रन मिला स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ पहला ओवर जो समाप्त होता हुआ, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। सावरडे बॉयज क्रिकेट टीम इस पहले ओवर में बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीता, शान स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला। और कल के दिन की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कल ठीक 10 बजे पहला मैच काउबॉयज बार्ली और महामाया शिरोडा इस टीम के साथ, दूसरा मैच जो होगा जोन और साकवार, प्रिंट जोन और साकवार, ये 2 टीमों के बीच में। उसके बाद शाम के दौर में भी जो कि गणपति वॉरियर्स जो कि कल के दिन में खेलेगी इस मैदान पर। उसगांव क्रिकेट टीम, शायद गोविंद उर्फ बाप्पा की टीम, वो टीम एक अच्छी टीम। और उसी के साथ पीवीजी वॉरियर्स कुडनेश्वर, श्री कृष्ण SC मड़कई, जगदम्बा, सावी वीरे और यश डेवलपर्स तालिगांव। बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर कैच छूटा और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन बढ़ गया स्कोर पर। ओवर पिच गेंद थी, बड़ा शॉट था, लेकिन सामने लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर के लिए मौका जरूर था। कैच छूटा, कैच छूटते ही 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। संजोत गेंदबाजी करते हुए, इस बार फिर से बड़ा शॉट, ये गेंद डीप मिड विकेट पर निकले, काउ कॉर्नर पर, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, 6 रन के लिए। कोशिश बढ़िया थी काउ कॉर्नर पर फील्डर की, लेकिन दूर थी फील्डर से गेंद। अड़े बल्ले से खेला, इस बार गैप में गेंद, बहुत शानदार फील्डिंग, फिर से एक बार, और जब तक गेंद को थ्रो करते 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल बना स्कोर में, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। ओपनिंग जोड़ी के बीच में अच्छी साझेदारी बनती हुई मैदान पर 16 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान से। हरीश और हरीश के साथ प्रहलाद, ये जोड़ी मैदान पर।
फुल टॉस गेंद लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, भीतरी किनारा लगा, मिड विकेट पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, लगभग चलते चलते दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन बना दिया। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आज का तीसरा दिन, दो टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, ये तीसरी टीम होगी, लेकिन कौन होगी बस थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। अल्टी पल्टी सफल नहीं रहे इस बार, अच्छी गेंद डॉट गेंद, संजोत गेंदबाजी करते हुए खेल जारी। दूसरे ओवर का 5 ओवर का मैच है आज का ये अंतिम मुकाबला। कल फिर से जुड़ जाएंगे सुबह के सत्र में 9:45 के साथ, जो कि 10 बजे मैच होगा, पहला मुकाबला होगा। फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद के लाइन से पूरी तरह से चूके, रिवर्स का प्रयास किया था शॉट खेलने का, बोल्ड हुआ उस गेंद पर और पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। डीजे थैंक यू डीजे। एक छक्का लगाया 8 पर खुद के व्यक्तिगत, प्रहलाद आउट होकर वापस और टीम का स्कोर 17 रन। एक विकेट पर हरीश मैदान पर और हरीश का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज महादेव बल्लेबाजी करने के लिए। खेल 2 ओवर का, तो स्कोर 17 रन, एक विकेट पर और तीसरे ओवर की शुरुआत पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच ईश्वर गेंदबाजी पर, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच। लेफ्ट आर्म फुल टॉस गेंद, ताकत कम पड़ गई शॉट पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, इस बार बिल्कुल कोई गलती नहीं फील्डर की और दूसरा विकेट वापस। डीजे थैंक यू डीजे। 7 पर खुद के व्यक्तिगत हरीश वापस। फुल टॉस गेंद थे, लेकिन थोड़े से शायद लगातार मैच खेल रहे हैं, थोड़े से थके हुए दिखाई देते हुए, जो कि वापस डगआउट में। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, गौतम। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और एक फुल टॉस गेंद, इस बार ड्राइव किया गेंद को ऑफ साइड पर, अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर सिंगल बना स्कोर में, सिंगल के साथ स्कोर 18 रन। खेल जारी तीसरे ओवर का, आने वाले अभी भी 2 ओवर का खेल, 5 ओवर का ये आज के दिन का तीसरा दिन। 7वां पर्व स्टार वॉइस ऑफ कुड़चोड़ेम जिनसे और से म्युनिसिपैलिटी पंचायत टीम हिस्सा लेती हुई ऑप्टम से बाहर इस बार जाने दिया, बल्ले को हटाया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन और मिला स्कोर में, 19 लॉस ऑफ 2 विकेट, 19 रन 2 विकेट पर। यह गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अपने बॉलिंग मार पर ईश्वर गेंदबाजी करते हुए एक डॉट गेंद के साथ, फिलहाल एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर स्ट्राइक एंड पर गौतम उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए और गौतम का साथ देते हुए साथी बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर महादेव। फुल टॉस गेंद, कवर पर मौका कैच का, फिर से शायद मिस टाइम कर बैठे। 2 विकेट अब तक जो कि वापस, वो फुल टॉस गेंद पर डीजे दिनू। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, क्षितिज बल्लेबाजी करने के लिए। कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन उसके बाद जल्द विकेट खो रही है सावर्डे बॉयज क्रिकेट टीम और मैच में कमबैक कर रही शान स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम, वाडेम क्रिकेट टीम।
इसी बीच अगली गेंद अपने बॉलिंग बार पर, पुलर लेन की गेंद, बढ़िया शॉट इस बार, अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फिर से एक रन बनेगा स्कोर में। सिंगल के साथ रन बना रही है मैदान पर। इस ओवर में कोई बड़े शॉट के लिए मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाजी में। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल पुलर लेन की गेंद, एक अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी हो रही है, कोई बड़ा शॉट मौका नहीं दे रहे हैं। ये खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, मौका था बड़े शॉट का, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई, एक मुश्किल सा मौका था कैच का, लेकिन कोशिश बढ़िया थी। और जब तक बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, 2 रन बने स्कोर के खाते में। एक अच्छे ओवर की समाप्ति होती हुई इस मैच में एक सफलता मिली और 2 सफलता, और उसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ टोटल, और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 22, लॉस ऑफ 3 विकेट। चौथे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में सनेश, 2 बैटर मैदान पर, क्षितिज और क्षितिज के साथ महादेव। अच्छा शॉट, सिंगल बनेगा स्कोर में, क्या दूसरे के लिए निकलेंगे? नहीं, बिल्कुल गेंद पर बिल्कुल हावी हो चुके फील्डर, और जब तक थ्रो करते तब तक सिर्फ 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ जो कि स्कोर आगे बढ़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर 23। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, बॉलर के पास से स्ट्रेट ड्राइव का एक सुंदर शॉट, फिर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर स्क्रीन पर, और गेंद को उठाते फील्ड करते, और 1 रन बनता हुआ स्कोर में 24 रन टोटल स्कोर 3 विकेट पर, 24 लॉस ऑफ 3 विकेट। फुल टॉस गेंद, शायद आज बिल्कुल सावड़े बॉयज क्रिकेट टीम की मैं बात करूंगा, लगातार जो फुल टॉस गेंद मिले उस फुल टॉस गेंद के फायदा नहीं उठा पाए। इस बार ये भी गेंद हवा में निकली थी, लेकिन मिड विकेट के फील्डर से बहुत दूर थी, और जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन जुड़ गए स्कोर में, 26 रन टोटल स्कोर। चौथा ओवर मैच का चलता हुआ, सनेश गेंदबाजी करते हुए। इस बार देखना होगा विकेट कीपर के लिए, लेकिन बहुत आगे गिरी गेंद, मौका नहीं बना कैच का, स्कोर वही पर 26, लॉस ऑफ 3 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, चौथा ओवर जारी, मुकाबला 5 ओवर का। 2 टीम सेमीफाइनल में, धीरज 11 असनोडा, रोहित क्रिकेट वास्को, और ये 2 टीम है जो उनमें से एक टीम, तीसरी टीम आज के तीसरे दिन की होगी पक्की। कल भी मुकाबले जारी रहेंगे। काउबॉयज बायली क्रिकेट टीम, महामाया शिरोडा, प्रिंट जोन साकवार, उन्हीं के साथ गणपति वॉरियर्स उसगांव, पीवीजी वॉरियर्स कुडनेश्वर। ओह, ये बड़ा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद, 6 रन के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद पर पहली बार बड़ा शॉट, डीड रे। बड़े शॉट के साथ स्कोर काफी तेजी के साथ आगे निकला, 32, 32 रन, 32 रन पर स्कोर। और शॉर्ट एम्पल का शॉट, ये मौका बनेगा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, सफलता चौथी, दिनो डीजे। चलिए थोड़ा बैट्समैन जल्दी चलिए प्लीज। कल के शाम के दौर में यश डेवलपर्स तालीगांव, जगदम्बा सावी वेरेम, श्री कृष्णा एससी मड़कई क्रिकेट टीम, पीवीजी वॉरियर्स कोडनेश्वर, तो ये टीम भी कल के दिन में जो कि दूसरे सत्र में जरूर देखने को मिलेंगे इस मैदान पर। फाइनल का मुकाबला जो 2 इनिंग का होगा, 5-5 ओवर के 2 इनिंग होंगे फाइनल के दिन में, और सुबह के 2 सेमीफाइनल के मुकाबले के साथ जो कि शायद लगभग 8 ओवर का मुकाबला, सेमीफाइनल के 2 मुकाबले, और उसके बाद 2 इनिंग फाइनल के मैच होगी। स्लोवर 1 इस बार, बहुत अच्छा शॉट, क्या दूसरा बनेगा? मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, लेकिन
दूसरे की संभावना को बिल्कुल समाप्त कर दिया। थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में, 1 रन मिला स्कोर में। अंतिम ओवर का खेल। और बॉलिंग मार्क पर कृपेश, अभिषेक 1 पर, जो नॉन स्ट्राइकर इन पर, स्ट्राइक पर महादेव। बड़ा शॉट देखना होगा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, और एक सफलता मिलती हुई शान स्ट्राइकर्स वाडेम क्रिकेट टीम को। और 5वां विकेट सावर्डेम बॉयज क्रिकेट टीम का वापस डीजे दिनू। बड़े शॉट के लिए जरूर निकले थे, लेकिन अच्छा कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। और एक नए बल्लेबाज अमेय, अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर, बहुत अच्छी जो कि पिछले मैच में उन्होंने खेल किया था। छोटी गेंद, इस बार बहुत आगे लंबी दौड़ लगाई, और एक शानदार कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। डीजे दिनू। स्कोर हो चुका है 33 रन, 6 विकेट पर। अंतिम ओवर का खेल, मैच का चलता हुआ कृपेश गेंदबाजी करते हुए, ऑन हैट्रिक कृपेश अपने बॉलिंग मार्क पर। और बड़ा शॉट स्लॉग सेव का, इस बार हवाई फायर, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, गेंद 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। 39, टोटल स्कोर 39 रन। छोटी गेंद, इस बार शॉर्ट ऑन पोल का शॉट, एक सिंगल बनेगा क्या, दूसरे के लिए निकलेंगे, मिड विकेट से बाउंड्री से आते, फील्डर गेंद को उठाते, थ्रो करते, एक खराब थ्रो, और जब तक कलेक्ट करते विकेट के पर, तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 41 पर। जो गेंद बिल्कुल ग्राउंड से बाहर गई थी, हमारे नूर भाई गेंद को वापस ला रहे हैं मैदान में। नूर भाई बहुत धन्यवाद। इस बार मिस टाइम कर बैठे, देखना होगा विकेट कीपर गेंद के नीचे कैच को पकड़ते हुए 7वां विकेट वापस निकलता हुआ टीम का। कृपेश को मिली सफलता, तो टोटल स्कोर हो चुका है पहले, जो कि 5 ओवर का खेल, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। शुरुआत में जो कि अमेय ने एक छक्का लगाया, 8 रन, महादेव 4 रन, प्रहलाद ने बनाए 8 रन, शुरू में हरीश ने बनाए एक चौके के साथ 7 रन। ये था लेखा जोखा बल्लेबाजी का। गेंदबाजी में आखिरी ओवर में एक छक्का जरूर लगा रुपेश को, लेकिन आखिरकार 3 सफलता में मिले, और टोटल 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 41, और टारगेट 42 का जुड़ जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में आज के अंतिम दौर में सर हरीश काकोडकर के साथ।
So Bhaval and Sanesh for SHAAN strikers. Shitish with ball in his hand, left hand and left-handed Bhaval Zori on a strike. And only 2 fielders allowed outside. Let's see where are those fielders placed. One at wide long on and one at square leg. And umpire says, yes, play start. 5 overs match. Target of 42 runs. In comes Shitish to bowl to Bhaval Zori from around the wicket. He goes for the switch hit up and over. The fielder, the ball is not racing up. And 2 runs scored. Bhaval Zori has this shot, the switch hit into his armory. That was not a bad ball. That was just outside off stump in the short of good length area where you always tell your bowler to bowl. But never mind, a good shot. 2 runs. Once again, he is going for that switch hit. The reason is the fielders are inside on the offside in the 30-yard circles, and also the bowlers of SANVORDEM boys, they must have seen concentrating on the offside region. But second time, he was unlucky to get any connection. This time, lower full toss ball. Bhaval Zori and Shanish are the best men of this team, and most of the time do the job convincingly for the side. And SANVORDEM boys must be hoping that whatever fielding mishaps happened in the last match should not happen this time around. The chances will be created and the chances should have been taken, because these two are one of the best here in this area, Sangam KFM region, Shanish and Bhaval Zori. So again going for the switch hit in the air. Will it be taken? And Patil drops a catch. I was just now mentioning that catches should not be dropped. Chances should have been taken. And such an easy catch of a best man in their side, Shanish. This can be very costly. This can be very fatal. Such catches dropped. Definitely dent the confidence of the bowlers. Once again, left-hander will be on strike. They have to get that back of the mind and play the match accordingly, according to the situation. What is gone is gone. So 4 on the board so far of the first 4 balls. Going for the switch hit once again. This time also not a hefty connection, just a single. Score moves on to 5. Mr. Subhash Desai, Executive Engineer, Division 7, Curchorem हांकां आमी येवकार करतात. आयचे मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्डाचे प्राइज दिवपाक, प्लस तांकां रिक्वेस्ट करता माचेर येवन बसका घेवची. This time in the air, this might be a catch. Fielder going after it and takes a good one. So the luck that had gone in favor of Sanesh has not worked for him, and second time around, no mistakes done by Shubham. First wicket going down of SHAAN strikers. In comes one of the most experienced from SANVORDEM area after Amey Naik, Harish. Played a lot many tournaments and won also a lot many tournaments in leather ball and tennis ball cricket. Has ample of experience, and now must have missed many matches because of the duty that he does as a PSI job in government of Goa Police. But now giving time for the game of cricket for SANVORDEM boys. In comes Harish. Once again, very nicely bowled just outside of stump. So far, whatever we have seen of Harish,
There must have been a pace decrease, but the accuracy and the consistency and the experience that he bowls with will definitely come into good effect for SANVORDEM boys. And Babal Zore is the key over here. Till the time this left-hander is on the wicket, there are a lot of things to worry for SANVORDEM boys. Fantastic player. I've seen him winning many matches single-handedly for his side, SHAAN Strikers. Outside edge, but away from the reach, and Bhai puts the body behind and gives just a single away down the third man region. So very good piece of bowling. He understands what Babal Zore was trying to do and just bowled short of good length outside off stump. He watches the batsman till the last moment, whether he's going for the switch hit, whether he's waiting for that slog sweeper down the leg side. This time an outside edge and just gets a single. Score moves on to 8. This is the second over in progress. So far 3 singles of the first 3 balls. This is exactly the pattern of scoring against Harish in the first 2 matches. Most of them were singles. He didn't give anything loose to hit him for 4 or a 6. So again, that was a slower ball. Once again, change of pace. But that ball was in the slot. If you had picked it up, if you were with strong bottom hand going for that quicker ball, then it is difficult to adjust to the pace later on. Intense match going on. One of these 2 teams will enter into the semi-finals. Big place up for grabs for both the teams. Going for the switch hit, but there is one man placed and he fields it very well. Wonderful fielding and just gives single. Shubham, lovely piece of fielding. He almost ran 10 to 15 meters and this is poor piece of running between the wickets by Babal Zore and his partner Raji. He expected maybe ball to go across the boundary line for 4 runs, so he didn't run the first run fast. That made the second run quite difficult. Once again, a lower full toss ball. These are difficult balls to hit away in the tennis ball cricket. Once again, another single. That's always been the scoring pattern for Harish. Once again, a stunning over from the experienced player from SANVORDEM boys. After completion of second over, the score is just 10 for the loss of 1. So in comes Shubham, who has fielded very well. So far just the 10 runs, so 32 runs required of 18 balls. This over also is going to be crucial. In fact, every over is going to be crucial. 1 week over from SANVORDEM boys side, the match can go away from their hands because it's not a big total that they are chasing. Defending, in fact. This time in the air, this might be a catch. Oh, what a stunning catch. What a stunning catch, diving catch. 2 easy catches dropped. So requesting Aslam Sheikh. Aslam Sheikh. So here it is.
Umpire, what is the soft signal? Not out declared here by the third umpire. After having watched the replays, well, you cannot blame the fielder also, and it was very close to the ground. That's the reason. Only a single taken. They didn't run for the second. You cannot blame Amish because he was diving there, and it's very difficult to understand whether the ball had landed or not. Sometimes when you are fielding and you are diving down close to the ground, your hands are down close, then it's difficult. Your eyes might not be totally in watching the ball. Benefit of doubt going to the batsman. Single taken. So in comes Shubham from round the wicket to the left-hander. Left-hand batsman Bhavalzori. This is once again an outside edge. Bhai fields it easily. So no loose balls given away here by the bowler so far. And fielding also has been set very well from the captain, because there is one man placed for that reverse hit that he likes to play, Bhavalzori, and that has curtailed Bhavalzori to play that shot. Good mind games going on in these quarterfinals. This time in the air, this might be a catch. This might be almost taken. He never drops the catch, and he points fingers at me because I always say he never drops the catch. A safest pair of hands on the ground, Harish Naik, and the ball goes to him. One more catch taken. This might be sixth catch of the day for him. So Raji departs and in comes Mohit. Key man is on your screens. Key man is on strike. Bhavalzori. So once again he is looking at his field. Bowler also getting his composure back. Trying to get his confidence, concentration back. This is once again heaved away. Can get 4 runs, but ball is not racing. Can they go for the second run? Babal wanted the strike, but batsman Mohit said, no, I cannot make it at that end. So let's stop it for a single. So far, 3 runs have come of the first 4 balls. Babal want to hit it. Shubham with just 3 runs of the first 4 balls. This time once again right in the block call region. Are they going for the second run? First run was very quick. Babal wants the strike. Babal says let it stop on a single. So 5 balls have been bowled in this over. 4 runs have been scored and a wicket has been taken by Shubham. The score is on 14. Target is of 42. Very intense match. Sometimes as a cricket lover, cricket fan, I always tell low scoring matches are very intense. Low scoring matches are very good to watch, because here bowler is also on top. Batsmen have to show their class. Batsmen have to maneuver the ball for singles and doubles, and also if there is a loose ball can get a boundary or a 6. So here is a chance for both the bowlers and batsmen to be the hero in a low scoring match. He goes for the switch hit. Not a bad ball, but he converts it into a 6. Bhavalzori is very strong in that area for the switch hit. Stunning shot from him.
After completion of 3 overs, the score is 20 for the loss of 2 wickets, 22 runs required in 12 balls. So 22 were required, now 21 required of 12 balls. Starts off with a wide, in comes Akshay Madwar to bowl this. This time in the air and very loose ball, full toss ball put away for 6. First loose ball of the innings from SANVORDEM boys side, and it went for 6 runs. This is once again very nicely played up and over the inner ring of the covers, going for 2 runs. This over is tilting the match in towards SHAAN striker's side. One loose end, one loose bowler, few loose balls can dent the spirits, dent the hope of SANVORDEM boys to enter into semi-finals, but it will definitely raise the spirits high of SHAAN strikers. 10 balls, 13 runs. Akshay has given away 9 runs in the first 2 balls, but he can definitely come back strongly if he can take wickets. But the batsman will think that I can get few more runs. This time a dot ball. This was much better. Batsman went for that mid-wicket, big hoik, no connection whatsoever. Dot ball is very valuable. Dot ball at this point. Big sigh of relief for the captain also. Everyone watching this match very closely. This time in the air, might go for 6 runs. What a strike! What a strike! Akshay Madwar's loose bowling has taken the match and tilted in favor of SHAAN strikers. This is much better 6 than the first one. Nobody had, in fact, scored a 6 in the last few overs in that part of the ground. This, I guess, after a long time played in the long on region. So you can see that's a wonderful connect. The moment it struck the bat, the timing and the power was excellent. So Mohit is the man for SHAAN strikers. This was better. This is just outside and in the good length area. 1 ball remaining in the 4th over. Score is 35. 7 runs required of 7 balls. Match right now very much in towards SHAAN strikers after this over turned out to be very costly. 15 runs have come off it of the first 5 balls. Still a ball is remaining. This time it's definitely a wide, way too outside. He thought the batsman is shuffling, so I will bowl a little bit wider. Right now, more comfortable is SHAAN strikers camp. They understand that it's just a matter of 1 loose ball, 1 hit, and they will be through to the semi-finals. 2 teams who have already made into the semi-finals are Rohit cricketers from Vasco, Dheeraj 11 Asnora. And today it is going to be the 3rd team. Wonderful ball right in the block hole. You cannot stop a single once the batsman decides to cross over for a single.
They will run for anything now. 5 runs required of the last ball. Let's see who is going to bowl. Anish. Anish was declared man of the match in the previous encounter for his stunning bowling in the last over. Can he repeat the performance? Can he bowl one more good over and defend at 5 runs? So something has to be changed here by the fielding sides. Let's see. Ame is trying to set the field to defend 5 runs. SHAAN strikers must be hoping that 5 runs. Yes, definitely the previous over has gone in towards our side totally. So 5 runs, we are right now comfortable. If it was 10 or 12, things could have been difficult because they had to go for the big hit. So how they approach this match is going to be very crucial. So in comes Anish, left arm round the wicket. So one player is kept somewhere close to short mid wicket to try to save the single. It's a good shot down the ground. They want to put pressure on the fielders. Good throw straight to the keeper. One taken will be on a strike now. So 4 runs required only of 5 balls. Is going to be very difficult for Anish to defend. He needs to get 1 or 2 wickets. Then only he can defend it. Catches to be taken. Otherwise, Babal Zore is still on the crease. Came as opening bat. Scored 1-6. Can certainly win it with 1 shot. Nevertheless, a very intense and good match. Oh, lovely ball. Fantastic bowling. Once again, he went for the switch hit. But the ball was perfectly bowled in the good length, Yorker length region. Quick, fast. No chance for finish. 4 balls, 4 runs. And he bowls a full toss. He didn't time it. Catch taken. He misses a full toss ball. So we are going for the third umpire referral. So it was a review taken. So it's a dead ball. So umpire signaling it to the not a no ball. It was below the waist height and Babal Zore missed a full toss. So after looking at the replays carefully by Aslam Sheikh, the player has decided it was a full toss, clear-cut full toss, and Babal Zore missing out on a easy ball. Now this is interesting. Now 4 runs are required of 3 balls. What a quarterfinals. What a match. So 4 runs required of 3 balls. Matche SHAAN strikers, matche फाटल्याने रोपाकडे लागी राव नागात. Once again an outside edge should be only a single. What a lovely over here from Anish. 3 runs required of 2 balls. SHAAN strikers matche फाटल्याने please. रोपाच्या फाटल्याने matche रोपा फाटल्याने. Yes, 3 runs required of 2 balls. If it's a tie, it will be a super over. Please note it. It will be definitely a super over.
Once again, chance of a run out. He doesn't collect the ball. My God, harakiri committed by the fielder. He was trying to grab it fast, trying to grab it early. What a wonderful captaincy from Ame Naik. He had placed the fielder understanding that the ball is going to go in that region and they will go for a single. 2 runs required of 1 ball. Chance of a run out. And he's going for the third umpire. What an anticlimax. What an anticlimax. If Anish has defended 5 runs, penalty पडटली परत सांगता. थर्ड अंपायर डिसिजन अजून आसा आणि ग्राउंडार धावनाका. डिसिजन अजून पेंडिंग आसात. ग्राउंडार कोण आयल्यात नॉन प्लेयर्स ते मातशे भायर सरात. नॉन प्लेयर्स कोण आसा ते मातशे भायर सरात प्लीज. Wonderful thinking from Ame Naik to throw at the non-strikers, and in comes Anish. And he's out. And SANVORDEM boys had entered into the semi-finals by 1 run. What a match. Nobody on the ground thought that when 5 runs were required, SANVORDEM boys are going to win this match. Babal Zore missed out on a full toss, gave away a catch, and then great bowling, stunning bowling from Anish. Wow, this is the match of the tournament. Undoubtedly the match of the tournament in the last 3 days. We have been witnessed by a thriller. I told you that Anish Phonekar was the man of the match in the previous encounter, and if he defends 5 runs, once again he is going to be man of the match, and it is Anish Phonekar who takes away back-to-back man of the match awards for SANVORDEM boys. Stunner of a match. So congratulations to SANVORDEM boys for making it to the semi-finals. Till then, it's bye from Harish Kakodkar. See you tomorrow for one more thrilling day. Hello, Harish. सगळ्यात पहिली मॅन ऑफ द मॅच प्राइज दिवपाचें उरलां SANVORDEM boys. प्रल्हाद उपर हाका रिक्वेस्ट करता ताचे मॅन ऑफ द मॅच प्राइज ताणें बाब अजय काकोडकर हांच्या हातान स्वीकार करचें. जबरदस्त परफॉर्मन्स, एक सुंदर अशी 50 मारिल्ली ताणें आनी 1 सायडेड खेळिल्लो आनी एकटोच खेळून मॅच जिखयल्ली.
प्रल्हाद हांव मागता बाबा अजय काकोडकर हाणें हें प्रायज प्रल्हाद उपर. Big round of applause to Prahlad for that knock of 50. Fantastic knock. तशेंच नेक्स्ट अवॉर्ड दितलो तो हांवें ऑलरेडी अनाउंस केला की दोनी मॅन ऑफ द मॅच वता अनीश फोंडेकार फॉर डिफेंडिंग व्हेरी स्मॉल टोटल इन द लास्ट 2 overs. So Anish is coming back in form and winning back-to-back match.